everyone, I hope you guys are doing well. My name is Seenu Pallavi and welcome to another video of my channel. And आज मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ है because I really wanted to shoot a video and I didn't wanted to apply makeup और इस वजह से मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी. So I just thought कि let's shoot a video without any makeup. And happy new year and let's just get started with the video. Oh shit, हम उतनी देर से वीडियो नहीं बना रहे थे क्या? Okay, so this is a video saying 38 wonderful beauty hacks that will make you shine and is by 5 Minute Crafts Girly and has got 19.9 million subscribers. Like the channel has 19.9 million subscribers. So obviously हम ये सारे 38 ideas नहीं try out करने वाले हैं, but yeah, we'll see what we can try out. Okay, so this says dark and pale skin. Yogurt, turmeric, rice flour, honey. Okay, so yogurt दही बहुत अच्छा स्किन को मॉइस्चराइज स्मूथ सपल बनाने का काम करती है. हनी इज अ रियली गुड ह्यूमेक्टेंट. राइस फ्लावर विल हेल्प टू एक्सफोलिएट योर स्किन. हमारे स्किन से जो भी डेड स्किन सेल्स है उसे बाहर निकालेगा, हटाएगा, ताकि जो भी हम उसके बाद इंग्रेडिएंट्स लगे उसके जो पेनिट्रेशन लेवल हो वो ज़्यादा बढ़ जाए. एंड टर्मेरिक स्किन सूदिंग एजेंट बहुत अच्छे से हमारे स्किन पे काम करती है. एंड इट ऑल्सो गिव्स दैट येलोइश टिंट ऑन आवर स्किन. सो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली वर्क. Okay, skin glow effect. Yes, this will give glow because there's turmeric in it. And see, now I'm just not against this, but जब भी कुछ भी whenever there is a DIY that I have to try out on my face, I become a bit conscious क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और कभी भी किसी भी चीज़ से रिएक्ट हो जाती है. तो I won't be trying this out on my, but हाँ मैं इसे हाथ पे ज़रूर ट्राई करूँगी. Okay, so मेरे घर में दही नहीं थी तो that is why I'll be making this thing without curd. So सबसे पहले we'll be taking चावल का आटा. So क्योंकि मैं बस थोड़ा थोड़ा ही लेने वाली हूँ. दूसरी तो चावल का आटा. Okay. So yeah, honey. Add it and mix everything nicely. Yes. So this is what I have got. Now I'll apply it on my hands. Okay. I'll apply it on my hands and then we'll leave it for 20 minutes. Okay. So this is how nicely I have applied. And we'll wait for 20 minutes and then I'll see you after 20 minutes. 20 minutes later. Okay, so 20 minutes हो गई है and this is how it looks. अब ये अच्छे से ड्राई नहीं हो पाई क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास कर्ड नहीं थी. मैंने कर्ड नहीं यूज़ किया, मैंने बहुत ज़्यादा हनी यूज़ किया था तो उसकी वजह से यू कैन सी इस टाइप से ड्राई हुई है. मतलब लाइक इट्स कमिंग आउट लाइक दिस. अच्छे से ड्राई आउट नहीं है बट स्टिल आई एम गोना वॉश इट nicely and then you'll see the results. Okay, so अब मैंने अपना हाथ धो लिया है and this is, I hope आप लोगों को एक येलोइश टिंट दिख रही होगी जो कि लाइक मुझे तो दिख रही है. यहाँ पर I don't know कैमरा में जा पा रही है कि नहीं. ओके यस. सो इस हाथ में मैंने नहीं लगाया है and इस हाथ में मैंने लगाया है. सो यू कैन डेफिनेटली सी द चेंज. लाइक ये थोड़ी सी येलोइश है and ये नहीं है. सो या बेसिकली आई फील दिस वर्क्स. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक. How to remove facial hair, unwanted facial hair, but मुझे इनके चेहरे पे एक भी facial hair नहीं दिख रही है. So I don't know what she's pointing out to. Milk, turmeric, salt. I seriously wish कि unwanted hair निकालना इतना easy और इतना efficient होता, but unfortunately I don't think this is gonna work. Okay, I don't think this will ever work क्योंकि सीरियसली फेशियल हेयर निकालना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है. बट स्टिल आई थिंक आई हैव सॉल्ट, टर्मेरिक एंड मिल्क
maybe I'll try it out on my hand. Okay, so this is the milk. कैसा जैसे, और मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मिल्क ले लिया, मतलब I'm pretty sure I'm not gonna need this much of milk. मुझे फेंकने का मन नहीं है. I think I'll drink it, at least half of it. Okay, अब ये बहुत कम हो चुकी है और अब मैं इतना फेंक सकती हूँ क्योंकि I'm pretty sure this will not work and then I'll have to waste it. So yes, milk, salt, so turmeric added. Okay, so this is my liquid. So I'll be applying it over here. आप लोगों को भी दिख नहीं रहा होगा, बट डेफिनेटली आई इंसर्ट अ पिक्चर जिसमें मेरे यहाँ के बाल दिख रहे हो. एंड यस, आई एम डन. आई थिंक आई एक्सटेंड इट. ओके, सो मैंने इसे पूरा लगा लिया है. एंड इन द वीडियो उन लोगों ने मेंशन नहीं किया कि हमें इसे कितनी देर तक छोड़ना है. सो आई लीव इट फॉर लाइक 20 minutes and then I'll wash it off. 20 minutes later. Hello, 20 minutes हो गई है and this is how it looks like. मुझे नहीं लगता ये सीरियसली कोई भी काम करने वाली है. लाइक हल्का सा भी कुछ भी इफेक्ट आने वाला है मेरी हेयर पे, बट स्टिल I'll wash this off and then we'll see. So this is what it looks like now. ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी आप लोगों के लिए, बट ये है बहुत ज़्यादा वाहियात और टट्टी थी क्योंकि बिल्कुल कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं इस हैक से और मैंने अपना स्वेटर भी गंदा कर लिया. सो दिस वाज वेस्ट. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर हैक. DIY जो भी बोलिए. ओके, कॉर्न स्टार्च, बेकिंग सोडा, कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल. ओके, पता नहीं लोगों ने बनाया क्या, बट आई थिंक आई हैव एवरीथिंग मेरे घर पे. तो मे बी आई ट्राई दिस वन आउट. आई एम नॉट श्योर. आई चेक आउट कि मेरे घर में क्या क्या है एंड इफ आई हैव अ कंटेनर लाइक दिस और नॉट एंड देन वील सी इफ आई विल बी मेकिंग दिस और नॉट. ओके, सो कॉर्न स्टार्च नहीं था बट वी हैव कॉर्न फ्लावर. सो आई विल बी यूजिंग कॉर्न फ्लावर. देन उसके बाद उन्होंने क्या डाला था, एंड देन बेकिंग सोडा. आई होप ये इक्वल क्वांटिटी हो दोनों की. एंड देन दे हैव एडेड कोकोनट ऑयल और मेरे पास कोकोनट ऑयल नहीं थी तो आई थॉट मे बी वी कैन यूज वैसलीन फॉर दिस बिकॉज व्हाट आई फील उन्होंने कोकोनट ऑयल इसीलिए यूज किया ताकि ये अच्छे से सेट हो पाए. सो मे बी वैसलीन कैन डू दैट जॉब ऑफ कोकोनट ऑयल. सो वील सी. आई डोंट नो कितना जरूरत होगा, मे बी शायद और थोड़ा जरूरत हो, पता नहीं. सो नाउ वील हैव टू मेल्ट द वैसलीन. सो आई विल बी यूजिंग लाइटर. टाइम बहुत कम है, ये वाला यूज करते हैं. ओके, I think we are done with melting of our Vaseline. So अब हम इसे इसमें डालेंगे. ओके, सो हमारा जो है वो थोड़ा ग्रेइश हो गया. इनका वाइट कलर है, हमारा ग्रे इसलिए हुआ बिकॉज जो स्पून था उसका बैक पोर्शन में डार्क कलर हो गया था लाइटर की वजह से. एंड मोर ओवर आई डोंट नो व्हाई वैसलीन बहुत जल्दी सॉलिड हो गई. आई थिंक वी आर डन विथ दिस थिंग. आई हैव टू रेफ्रिजरेट इट
फॉर 1 hour. वीडियो में उन्होंने 1 hour बोला, बट आई एम नॉट श्योर. मे बी आई रेफ्रिजरेट इट ओनली फॉर 30 minutes, क्योंकि वैसलिन जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा जल्दी ही सॉलिड हो रही है. सो आई डोंट थिंक आई नीड टू रेफ्रिजरेट इट फॉर लाइक 1 hour, बट या विल सी. A few moments later. मैंने इसे फ्रिज से आधे घंटे के बाद निकाला है एंड विल सी हाउ दिस इज. हाँ ऑब्वियसली ग्रे कलर की है. विल सी. ओके, लेट्स जस्ट अप्लाई इट. नहीं अच्छे से लग पा रही है. इट इज स्मेलिंग लाइक वैसलीन ऑब्वियसली, बट या इफ यू सी दिस लाइक nah, it is waste of time and effort and ingredients. Okay, तो अब हम चलते हैं अपने next hack की तरफ. Okay. See, this is the thing that I don't understand. कौन अपने साथ सुई धागा लेके ऑफिस जाता है? लाइक अगर आप में से कोई भी ऑफिस जाते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या आप अपने साथ सुई धागा लेके ऑफिस जाते हो. लाइक आई डोंट थिंक दिस मेक्स सेंस. सेफ्टी पिन्स आर ओके, बट सुई धागा आई डोंट थिंक लाइक पीपल नॉर्मली एंड यूजुअली कैरी सुई धागा विद देमसेल्व्स. बट स्टिल हाँ ठीक है यार, चलो बहुत अच्छे से इन्होंने सिल के दिखा दिया, बट द होल बैकग्राउंड वॉज नॉट दैट गुड आई फील, क्योंकि आई डोंट थिंक हमें से कोई भी सुई धागा लेके अपने साथ ऑफिस जाते हैं. बट स्टिल आई ट्राई दिस आउट. लाइक आई हैव अ गंदा कपड़ा, ठीक है, यहाँ पर से फटा हुआ है, बट स्टिल आई टीयर इट वंस अगेन. ओके, सुई धागा. ओके, सो लाइक मैंने इसका जो ये वाला पार्ट है उसने ये कर दिया है. एंड let's see. Okay, I think I understood. And when you are done, you just have to pull it like this. Hey, wow, this is really working, I feel. Okay, this did work. Wow, I'm so happy. As you can see, this did work. मतलब अगर आप अच्छे से करोगे तो ऑब्वियसली ये काम करेगी. एंड दिस इज द बैक साइड, लाइक दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस इज द बैक साइड. सो या इट डिड वर्क. सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग देयर विथ मी. जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो लोग नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. And yes, I'll see you guys in my next video. Till then, take good care of yourself. Bye bye.